अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी. याद है मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की थी आप लोगों से when I was talking about isothermal process. Internal energy का symbol is U. What is internal energy? Names एक बहुत clear हो जाता है. Internal मतलब the one which is inside. Okay. So the energy which is going to be stored inside the substance is called as internal energy and it is denoted as U. It is generally being made up of kinetic energy, that means it is energy due to motion, and potential energy, it is nothing but energy due to position. Okay, इससे बना हुआ है generally kinetic energy as well as potential energy. Okay, the symbol of this is delta U is equal to U2 minus of U1. This 2 is of initial state, no ways. Okay, मुझे यहाँ से आवाज आ रही थी या कोई लोग बोल रहा था सर कैसे हो सकता है. This is final state और U1 कौन सा होगा? Initial state. Alright, अब देखिए, this is a very important symbol, delta. It means difference. लेकिन symbol is what? किसका है वो? State function का. Okay, so याद रखिएगा कि it is a state function. Next thing is the amount of energy is related, internal energy is related to the amount of the substance. और अगर वो amount of the substance के ऊपर आधारित है तो आप शायद जानते होंगे कि हम बोलेंगे इसको extensive property. याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ाया था? Yes. Intensive, independent, the two I's. Yes. So extensive is dependent on the amount of the substance. Next thing is exact calculation अगर पता करना है हमें डेल्टा U का. So the best way is what we do is कि डेल्टा U को हम एक्सप्रेस करेंगे in terms of W and Q. Okay, and I'll make it as a capital Q, so there won't be any difficulties as such. So delta U is being expressed in terms of what? W as well as Q. Now why it is so? दो रीजन है दोस्तों. Number one is याद कीजिएगा W and Q are the two predominant, the most popular examples of path function. Okay, बाकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है और इस चैप्टर में हम डिस्कस और करेंगे तो सब स्टेट फंक्शंस हैं. लेकिन W and Q are path functions. यानी it doesn't depend upon the initial state and the final state. क्योंकि अगर मुझे डेल्टा U एक्जैक्टली पता करना है तो मुझे U2 मालूम होना चाहिए, मुझे U1 मालूम होना चाहिए. If there is something uncertainty in these two, there will be an uncertainty in delta U. तो accurate determination कैसे पता करेंगे? तो ये final state, initial state का झंझट ही नहीं चाहिए. We don't want that. So that's the reason we are considered path function because they depend not on the initial state and final state. This is reason number one. Reason number two is the two parameters W and Q, they are experimental values. दोस्तों खासियत क्या मालूम है? Experiments can never go wrong. हाँ, experiments करने वाला गलत हो सकता है लेकिन experiments doesn't go wrong. Okay, theory गलत हो सकता है, but experimental results have to be accepted and they are accurate. Okay, इसलिए जब डेल्टा U को हम लोग ने एक्सप्रेस किया in terms of W and Q, तो obviously डेल्टा U का जो वैल्यू मिलेगा मुझे वो क्या होगा? Accurate होगा. You know the sign conventions of W and Q, right? So I'll give you some examples so it becomes very clear. I'll give you some cases. Case number one. Suppose if the system absorbs 20 kilojoules of heat. Now when I'm talking about heat, तो common sense है, it is related to Q. Absorb कर रहा है दोस्तों. In endothermic. So obviously the sign has to be what? Positive. So therefore we say Q is equal to positive 20 kilojoules. Now because this delta U is expressed in terms of Q and therefore we say delta U is also plus 20 kilojoules. So the value of 20 kilojoules or plus 20 kilojoules is related to this Q value. And this Q value is accurate.
क्योंकि मैंने बता दिया है उसके दो रीजन, बिकॉज इट्स अ पाथ फंक्शन एंड बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, तो दिस वैल्यू इज बेस्ड ऑन दिस एंड दिस इज एक्यूरेट, ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज आल्सो, जी हाँ, एक्यूरेट। सेकंड केस बताता हूं मैं आपको, एंड दैट इज द वर्क डन on the system, obviously, so it will be by the surrounding, is say 30 kilojoules. Okay, now see this on the system by the surrounding. किसने काम किया यहाँ पे? सराउंडिंग। अभी देखो, आप काम करते तो आप थक जाते हो। क्यों थक जाते हो? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है। सेम थिंग इधर भी है, सराउंडिंग ने काम किया है तो सराउंडिंग का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और अगर सराउंडिंग का एनर्जी लेवल कम हो गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सिस्टम का एनर्जी लेवल तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी, टोटल एनर्जी को बरकरार रखना है, और बढ़ेगा मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। सो W इज इक्वल टू प्लस 30 किलो जूल्स। अब क्योंकि डेल्टा U is expressed in terms of W, so therefore we say delta U is equal to plus 30 kilojoules. आई बात समझ में? ओके, अब ये वैल्यू इसके ऊपर आधारित है और ये वैल्यू एक्यूरेट है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू भी एक्यूरेट ही होगा। समझ रहा है? वेरी गुड। मैं एक और एक केस देता हूं आपको, एंड दैट इज केस नंबर 3, एंड दैट इज सिस्टम रिलीजेस heat of 10 kilojoules and does work on the surrounding of 15 kilojoules. कितना किलोजूल्स होगा? 15। तो बताइए फिर क्या होगा? देखो, एक एक करके करें। सिस्टम रिलीजेस हीट, हीट वाला क्यों? रिलीज किया है, दे दिया है, तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कौन सा साइन आएगा? माइनस। सो वी हैव minus 10 and does work on, system is doing work on what? Surrounding। सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम थक जाएगा, उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब माइनस, तो कितना आएगा ये? माइनस 15 किलो जूल्स। सो कितना आ गया? माइनस 25 किलो जूल्स, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। ओके, सो डेल्टा यू का वैल्यू ये दो वैल्यूज पे डिपेंड करता है, -10 के ऊपर और -15 के ऊपर, और ये दोनों वैल्यू एक्यूरेट है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू तो एक्यूरेट होना ही है। Alright, so this is the way, my dear friends, I want you to understand. We first of all try to understand what is internal energy. It's the energy which is present inside the substance, and obviously the substance is present inside the system, वो surrounding में तो होगा नहीं। अब फिर हम लोग ने ये जानने की कोशिश की है दो चीजें। नंबर 1 कि डेल्टा यू है, मतलब वो स्टेट फंक्शन है, इट इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल। और उसके बाद वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इज द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा यू पॉसिबल, and that is simple. It is to be expressed in terms of W and Q, and there are two reasons I given you. Number 1 is both of them are path functions, so we are not related to the initial state and the final state, and the second is both of them are experimental values, and experimental values are accurate, and hence it has to be accepted. Okay, and then to make this concept very clear about this, okay, delta U is related to W and Q, so what I did, मैंने आपको ये 3 केसेस बताया बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू से जल्दी दिमाग में जाता है। आई एम वेरी श्योर ये गया है आपके दिमाग में। ठीक है, वेरी गुड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी बिगिन विद अ न्यू कांसेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हमें कंसीडर करना है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है, और जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया उससे आपको ये समझ में भी आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 है, और वो ये है कि द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ये पहला स्टेटमेंट है। याद है दोस्तों, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, जी हाँ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स।
मैंने ये भी बताया था आपको कि जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, द टोटालिटी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्स। जो कुछ भी है सब कुछ यूनिवर्स के अंदर समाया हुआ है, ऐसा हम इस चैप्टर में मान्यता रखते हैं। करेक्ट? सो आपने तो सुना ही होगा इन योर लोअर क्लासेस कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मतलब यहां पर यूनिवर्स है और इसलिए एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब यूनिवर्स किसका बना हुआ है? सिस्टम और सराउंडिंग का। ओके, तो उधर सिस्टम और सराउंडिंग के आपस में एनर्जी का इंटर कन्वर्जन चलेगा। एनर्जी विल गो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, लेकिन रहता तो वो यूनिवर्स में ही है ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? फिक्स, सेम, और वी यूज द वर्ड कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, जिसे हम लोग ने सिंबलाइज किया था एज यू ऑफ an isolated system remains constant. अब दोस्तों, if you remember I was explaining about isolated system, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल के जरिए याद रखो तो बहुत आसानी से रिकलेक्ट होगा, एंड दैट इज गर्म चाय इन थर्मस फ्लास्क। ओके, थर्मस फ्लास्क का ढक्कन बंद कर दिया है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज एनर्जी इज नॉट गोइंग टू गो आउट, nor the outside energy is going to come in. All right, and that means that whatever the energy which is present inside the system, याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने बोला था the energy which is inside is called as internal energy। तो जो भी एनर्जी अंदर है सिस्टम के अंदर वो बरकरार रहेगा। बरकरार रहेगा मतलब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ना वो बाहर जाएगा ना बाहर से एनर्जी अंदर आएगा। सो दैट इज व्हाट इट सेज, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ये सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट आप सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से, मैं थोड़ी सी शुरुआत कर देता हूं और मुझे यकीन है पूरा कि जो बाकी का जो स्टेटमेंट है वो मेरी कानों में गूंजेगा आपके मुंह के द्वारा, एंड दैट इज एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। ओके, अब मुझे सुनाई दे रहा है आप लोग क्या बोलना चाहते हो, उसका दूसरा पार्ट भी है, एंड दैट इज बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। राइट, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। एनर्जी ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो वह नष्ट होता है। ओके, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इसलिए तो बोला जाता है कि द एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज व्हाट? कांस्टेंट। हाँ, लेकिन एनर्जी के काफी अलग अलग रूप होते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। Okay, that means there is work, which is mechanical energy, then there is gravitational energy, kinetic energy, potential energy. So many energies are there. So from one form of the energy it can be converted into another form, but the amount is going to remain what? Same. So that is what it says. Energy can neither be created nor being destroyed, but can be converted from one form to another form. तो दोस्तों ये आपको तीन स्टेटमेंट्स याद रखना है जहां तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेंगे। नंबर 1 इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब यहां पर क्या है? टोटल, obviously should remain what? Constant. दूसरी बात है the total internal energy of the isolated system should remain what? Constant. Alright? और तीसरा है energy can neither be created nor being destroyed, but yes, it can be converted from one form to another. ठीक है, क्लियर हो गया ये आप लोगों को? वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग इज कि इसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाए। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक फॉर्मूला होगा, तो कैसे उस फॉर्मूला की तरफ पहुंचे हम लोग, तो हम बात करेंगे अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो काफी स्मार्ट है, तो तुरंत समझ जाएंगे ये FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें बहुत सिंपल है, दैट इज कि लेट अस अस्यूम दैट Q is nothing but it's the amount of heat absorbed by the system. Okay, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पहले। So it's the amount of the heat absorbed by the system. Okay, because in this particular chapter we are always going to talk about the system. Okay, next one is हम consider करेंगे W को। W is nothing but it is the work done on the system. अब अगर दोस्तों ये दो कंडीशंस याद रखें कि व्हाट इज दैट? Q, amount of heat absorbed by the system,
And what is W? Is the work is done on the system. तो common sense है, if it is on the system, so it has to be what? सराउंडिंग के नजरिए से क्या बोलेंगे? जी हाँ, अगर एक जगह पर ऑन है तो दूसरी जगह पर क्या होगा? बाय होगा. सो इट इज बाय द सराउंडिंग. Now, my dear friends, आपको पता होगा कि I've already discussed that internal energy is always going to be expressed. The change in internal energy, okay, because internal energy एक state function है. So the change in internal energy is always expressed in terms of what? Q as well as W. तो दोस्तों इस कंडीशन में याद रखिएगा कि जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है और जब सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया है तो इसके वजह से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दिस विल रिजल्ट इन अ increase in U. U मतलब जानते हो ना? Internal energy. And therefore, the formula now we say is delta U is equal to Q plus W. ये एक बहुत ही important formula में मिल गया है. Okay? The summation of the amount of heat absorbed, okay, by the system and the amount of work done on the system, okay, is equal to what? Increase in internal energy. दोस्तों delta का मतलब क्या होता है? Change. ओके अब यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा दोस्तों. एंड दैट इज डेल्टा का मतलब चेंज होता है. अगर कोई भी वैल्यू बढ़ता है तो हम उसको चेंज बोलते हैं, कोई भी वैल्यू कम होता है तो भी हम उसको चेंज बोलते हैं, है क्या नहीं? लेकिन अभी वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? यहां पर आइए, ये ट्राइंगल जब इज चेंज उसके पहले देखो क्या है. ओके अगर उसके पहले कोई भी साइन नहीं है तो वो प्लस है. प्लस है मतलब वो बढ़ा. ओके अगर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया तो दैट मींस वो कम हो गया. आई बात समझ में? तो यहां पर मैंने क्या लिखा? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. इसलिए यहां पे डेल्टा यू के पहले कोई भी साइन नहीं है और आप तो जानते हो अच्छी तरीके से कि अगर कोई भी साइन नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव. You understand this part? So the summation of the amount of heat absorbed by the system and the amount of work done on the system is resulting in increase in internal energy, and that is the formula of the first law of thermodynamics. Alright? ये हो गया for a larger part. अगर suppose हम consider करेंगे कि small change हो रहा है, okay? If small की बात करेंगे, मैंने आप लोगों को डेरिवेशन भी एक्सप्लेन किया है वर्क का, तो वहां पर मैंने बोला था कि whenever we consider small, that means we use what? D, differentiation. Differentiation is small parts, and then all those small parts has to be brought together. That is integration. ये दोस्तों difference है between differentiation and integration. तो for a small change, इसी फॉर्मूला को हम एक दूसरे रूप में लिखेंगे, and that is du is equal to dq plus dw. इस तौर पे लिखेंगे हम लोग. Okay, this is for a small change. du is equal to what? dq plus dw. So that means if there is a small amount of heat absorbed, small amount of work is done on the system, so that will result in what? A small increase in internal energy. आई बात समझ में अच्छी तरीके से? पक्का? Yes. Now mind dear friends, once we have understood that this is what is the formula for first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. So let us now apply that particular formula to the various processes. This I have already explained to you before as well about what are the different processes. So let's start one at a time. तो सबसे पहले तो formula of the first law of thermodynamics और वो है delta U is equal to Q plus W. ये अपना formula है. ठीक है? अब इसे अप्लाई करेंगे. ओके एप्लीकेशन टू द वेरियस प्रोसेसेस. तो पहला प्रोसेस है हम लोग कंसीडर करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल. दिस इज द कॉमन फॉर्मूला, a mathematical equation of formulation of first law. Every process is associated with a particular condition. तो वो कंडीशन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में अप्लाई करो तो you get a new formula, and that new formula is exclusively for that particular process. समझा? शुरू करते हैं पहला जैसे एडियाबैटिक. मैंने आपको बताया था, तुरंत याद करो एग्जांपल. hot tea in a thermos flask. Okay, so heat will neither go out nor it will come in. So that means the heat is going to remain what? Constant. Heat is given as what? Q. तो उसका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा. So for an adiabatic process, Q will be equal to 0.
अब यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे कि सर हीट तो अंदर रहेगा ना, गर्म चाहिए है तो आपने जीरो कैसे बोला? लेकिन दोस्तों प्लीज बी वेरी क्लियर, यहाँ पर Q का मतलब इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। याद रखिएगा दोस्तों, ओके, इट इज अमाउंट ऑफ हीट आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, और ना वो हीट एब्जॉर्ब होता है ना वो हीट रिलीज होता है, और इसलिए फिर उसका वैल्यू जीरो है। ये अमाउंट ऑफ हीट का वैल्यू जीरो नहीं है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। So Q is equal to 0. अब ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, ओके, into this first law of thermodynamics. So हमें क्या मिलेगा? डेल्टा U is equal to W. तो ये हमें जो मिला है वो एक नया एक्सप्रेशन मिला है, and that is only and only for what? Adiabatic process, for nobody else. So it is something which is very exclusive. और इस तरीके से अगर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है इसके आधार पर, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एंड दैट इज के ये देखो डेल्टा के पहले कोई भी साइन नहीं है, सो दैट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मींस व्हाट? देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज। सो व्हाट यू हैव टू से इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आई इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी W के पहले कोई भी साइन नहीं है, सो इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये प्लस साइन है, और W पॉजिटिव कभी होता है व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्लियर हो गया? कंसेप्ट इज क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज वी गो इनटू आइसोथर्मल प्रोसेस। दोस्तों जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर जीरो नहीं है दोस्तों, temperature of the system can be anything. I'm not concerned with that. Okay, it can be 100 Kelvin, it can be 1000 Kelvin, it can be 2000 Kelvin. But then what is to be remembered from our point of view is that that particular value of the temperature should not change. इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत लोग आइसोथर्मल प्रोसेस और T equal to 0 लिख देते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बोला था, वापस एक बार बोलता हूँ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, ये T equal to 0 नहीं है, it is delta T equal to 0. Also, my dear friends, you remember that I told you that temperature is a function of internal energy. तो इसका मतलब ये हुआ कि if the temperature is constant, the internal energy is also constant. There is no change, and therefore I will say delta U is also equal to 0. Temperature is a function of internal energy. अब ये इधर सब्स्टिट्यूट करो, so what we get is 0 is equal to Q plus W. Therefore we have Q is equal to minus W. Okay? आप ऐसे लिख सकते हो, और you can also write it down as that when I लिखा Q is equal to minus W, so I can also write down as W is equal to minus of Q. The choice is yours. दोनों में से कोई भी लिखो, it's you are right. लेकिन इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, याद है ना? इसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, ऐसा यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखना है। तो प्लीज मेक श्योर that whatever is the formula that you are writing, okay, that should match with the statement. ऐसा ना हो कि आप फॉर्मूला ये लिख रहे हो और स्टेटमेंट इसके बेसिस पे हो, एंड वाइस वर्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम एक स्टेटमेंट अभी लिखेंगे, तो आई जस्ट पुट अ एरो ओवर हियर, तो आपको समझेगा कि ये स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो व्हाट वी हैव टू से इज Q के पहले कोई भी साइन नहीं है, सो इट हैज टू बी व्हाट? पॉजिटिव, और Q पॉजिटिव कभी होता है? साइन कन्वेंशंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब। सो व्हाट यू हैव टू से इज the amount of heat absorbed is equal to the amount of work done by the system. समझा ना भी by the system क्यों आया? जी हाँ, क्योंकि यहां पर क्या है? W is what? Negative, इसलिए इट इज बाय द सिस्टम। अगर आपको इसके आधार पे करना है तो यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, तो अभी क्या करना है? दो शब्द चेंज करना है। एक ये एब्जॉर्ब्ड है, ओके, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना के रखता हूँ तो आपको समझेगा अच्छी तरीके से। ये दो सिर्फ चेंज करना है तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। एब्जॉर्ब की जगह पर रिलीज कर दो और इधर बाय की जगह पर ऑन कर दो, तो फिर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन आपको दो में से कोई भी एक लिखना है और चॉइस आपका है, सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया है। याद रखिएगा कि द फॉर्मूला एंड द स्टेटमेंट वो दोनों मैच होना चाहिए। ओके, सो दिस इज फॉर विच प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज वी गो इनटू आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक, कोर मतलब अगर आपको याद होगा इट्स वॉल्यूम, सो डेल्टा V इज इक्वल टू 0. देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम माय डियर फ्रेंड्स. और दोस्तों याद रखिएगा, एक बहुत ही सिंपल सरल बात बताना चाहता हूं. जब भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, हम गैस की बात कर रहे हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि गैस कैन अंडरगो एक्सपांशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन. In expansion, the volume increases. In contraction, the volume decreases. I hope you know this very well. लेकिन यहाँ पर तो there is neither an increase nor a decrease. और अगर increase भी नहीं हो रहा है, decrease भी नहीं हो रहा है, तो इसका conclusion क्या है दोस्तों? कि गैस का ना तो expansion हो रहा है, ना contraction हो रहा है. अब इस सिचुएशन में if you can recollect, there was a movable piston. याद आ रहा है? weightless and a frictionless piston जो ऊपर नीचे हो रहा था. Okay, there was a displacement. और वो ऊपर नीचे क्यों हो रहा था? Because of nothing but कि the gas was undergoing expansion, contraction. लेकिन जो यहाँ पर नहीं हो रहा है, so that is the piston ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, so displacement is 0. So if the displacement is 0, आपको मालूम है अच्छी तरीके से work is equal to force into displacement. Displacement 0 है तो work is 0. बहुत सिंपल है. So therefore we say W is equal to 0. और W 0 है तो वो इधर सब्स्टिट्यूट करो. So we get delta U is equal to Q. लेकिन फिर इधर कर देना V, because all these is going to be only at constant volume under no other conditions. So we get this particular part, delta U is equal to QV. और उसके हिसाब से now when we are going to write down the statement, what we are going to say is increase in internal energy, increase in internal energy is equal to amount of heat absorbed by the system at constant volume. Understood this very well? डेल्टा के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज टू बी व्हाट? इंक्रीज. क्यू के पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, मतलब इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एब्सॉर्ब. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट हैज टू बी एट व्हाट? कांस्टेंट वॉल्यूम. This is very important. Okay, it cannot be under any conditions. Okay, it is very clear. It has to be under constant volume. तो बताइए दोस्तों, ये तीसरा वाला भी बात क्लियर हुआ? Yes, everybody? Fantastic. We have discussed now 3 particular processes with respect to the application, with respect to the formula of the first law of thermodynamics. Okay, that is this. Delta U is equal to Q plus W. Okay, अभी एक चौथा प्रोसेस है. हम लोग ने कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया है? कैन वी जस्ट रिकैप? पहला था एडियाबैटिक, दूसरा था आइसोथर्मल, तीसरा था आइसोकोरिक, फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोबेरिक. सो वी गोइंग टू एन आइसोबेरिक प्रोसेस. पर आइसोबेरिक मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था बार, इट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर. सो आइसोबेरिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट. सो हम बोलेंगे कि डेल्टा P इज इक्वल टू 0. ओके, वी से दैट्स. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वी डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर. ठीक है, प्रेशर रिलेटेड कुछ भी नहीं है. लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अगर जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो फिर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, इफ यू कैन जस्ट रिकलेक्ट, ओके, व्हाट इट इज, and that is W is equal to minus of P delta V, और we say external pressure. याद है आप लोगों को? मैंने ये आपको बताया था, डिराइव करके दिया था आपको. अब ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. So what we get is delta U is equal to Q minus of P delta V. Okay, this is what we get. Delta U is equal to what? Q minus of P delta V. Or else what we can say is that Q is equal to delta U plus P delta V. This is what the formula that we get. Okay, external pressure. Okay, for which process? Isobaric process. और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये कंडीशन लिखना जरूरी है. So it is QP. Okay, it is only at constant pressure. Specify कर दिया है हम लोग. Alright, तो इस तरीके से अब हम क्या बोलेंगे कि it is the amount of heat absorbed by the system at the constant pressure is equal to the sum of increase
in internal energy and work done on the system. This is what we need to consider over here. Alright, the amount of heat absorbed by the system, क्योंकि plus है, so it has to be what? Absorbed by the system. It is nothing but equal to the sum of the increase in internal energy, क्योंकि इसके पहले plus sign है, so it is increased. इसके ऊपर भी plus sign है, so that means it is the work done on the system. Okay, so this is the way we have done with respect to the formulation of the first law of thermodynamics with respect to 4 important processes. Okay, पहला आइसोथर्मल था, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोकोरिक और फिर है आइसोबेरिक। यानी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला था, फिर हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर प्रोसेसेस। आई बात समझ में आप लोग को? ओके, नेक्स्ट थिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मैंने आप लोग को बोला था कि जब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात कर रहा था मैं सब, when I was talking about specifically path function, the two prominent examples for path function are what? Work as well as heat, that is W and Q. तो इस सिलसिले में मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, and that is कि when I talk about Q, it is going to be a path function because it depends upon the path followed. Okay, but when you talk about QP and QV, यहाँ पर तो path is very specific. It's defined कि it is going to be a constant pressure and constant volume. और जब पाथ डिफाइन है तो ऑब्वियसली वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं। जब रास्ते अलग अलग होते हैं तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर तो पाथ डिफाइंड है, आपको इसी रास्ते से जाने का है, तो फिर उस रास्ते के ऊपर कोई आधारित ही नहीं है। और इसीलिए फिर हम बोलेंगे QP and QV does not depend upon path, it will depend only on the initial state and the final state, और इसलिए वो बन जाता है state function। तो दोस्तों ये बात गौर से याद रखना कि जब हम सिर्फ Q की बात करते हैं तो उस समय हमने कोई भी पाथ डिफाइन नहीं किया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो निर्भर करेगा कि कौन से पाथ पे आप चल रहे हो। ओके, द रिएक्शन प्रोसीड्स ऑन व्हिच पर्टिकुलर पाथ, दैट इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज अ पाथ फंक्शन। But when I specify at constant pressure or when I specify at constant volume, that means I have already defined the path. That means the values now no more depends upon the path. Therefore, it will only depend upon the initial state and final state, and because of which I will call it as a state function. So Q is a path function, but QP and QV are state functions. आई बात समझ में? Yes, yes, मुझे पूरा यकीन है आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। Okay, very good. Now, my dear friends, we go into the next concept, and that is all about enthalpy of a reaction. So, the heading is enthalpy. The symbol of which is capital H. Now, what is enthalpy is all about? Enthalpy is nothing but it is the total heat content of the system. What it is? It is the total heat content of the system. So that means if you want to go into its mathematical expression, the mathematical expression, I just write it down in short, ME, is giving you H is equal to U plus PV. This is the mathematical expression. So that means U is internal energy plus PV is nothing but work or pressure volume type of work. Alright? So enthalpy is nothing but it is the summation of the internal energy as well as pressure volume work. Alright? Next thing is, since U, P and V are state functions, and therefore we conclude that H is also a state function. Alright, H is also a state function. I hope you should remember दोस्तों कि state function वो होता है जहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर आधारित है। वो किस तरीके से परिवर्तित हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। So यहाँ पर भी U, P and V, they are all state functions, and therefore it is very clear that H is also a state function. So what is enthalpy? This is what you need to remember. First point, the total heat content of the system, okay, that is called as enthalpy. Uska mathematical expression is H is equal to U plus PV.
और फिर आपको बताना है कि u, p and v आर स्टेट फंक्शन और इस वजह से h इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, जब वो स्टेट फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएगा. द चेंज इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड बाय मींस ऑफ डेल्टा. ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं. सो नाउ वी गो इनटू द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा h. We discuss about what? Expression for delta h. Very simple expression it is. So to begin with, what is a mathematical expression? Yes, we have h is equal to u plus pv. Okay, this is what the mathematical expression is. Alright, now if I am going to give this equation as number 1 and I say apply equation 1 to initial state as well as final state, alright, at constant pressure, then what we have is, we have got two more expressions now, one for initial state and another for final state, and I hope you know the difference. Initial state को हम number 1 देते हैं और final state को हम number 2 देते हैं, और इस वजह से हमें क्या मिलेगा अभी? h1 is equal to u1 plus pv1. इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 देंगे. h2 is equal to u2 plus pv2. This is expression number 3. So this 2 is for initial state and this 3 is for final state. अब आप बोलोगे सर इधर p1 p2 क्यों नहीं? क्योंकि the my dear friends the pressure is constant. Okay, p1 will be equal to p2. Constant का मतलब यही है ना कि the value is going to be what? Same. ठीक है, ये हो गया. अब हम बात करेंगे अबाउट चेंज, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा, और डेल्टा का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. क्या फॉर्मूला है वो दोस्तों? एंड दैट इज इट इज फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. सो दैट मींस आई नीड टू गो फॉर 3 minus 2. Okay, this is for final and this is for initial. So we go into the next point and that is 3 एक्सप्रेशन 3 माइनस एक्सप्रेशन 2. दोस्तों याद रखिएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आंसर इज 1, 3 minus 2 is 1. ये मैथ्स नहीं हो रहा है सर. ओके, ये डेरिवेशन चल रहा है. ठीक है. सो नाउ व्हेन यू गो फॉर दिस व्हाट वी हैव इज h2 minus of h1 is equal to u2 minus of u1 minus of u1 plus pv2 minus pv1. This is what the expression is. h2 minus h1 आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, delta h. u2 minus u1 is delta u. p is common, so we say v2 minus of v1. So therefore we have delta h is equal to delta u plus p delta v. And this is, my dear friends, the expression for the change in enthalpy. तो देखो ये दोस्तों दोनों बाजू में expression दिख रहा है आपको. Again, what is the change is, this is the expression for enthalpy and this is the expression for change in enthalpy. लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, under which condition? Constant pressure. Okay. Now next thing is, okay, मैंने आप लोगों को बताया था कि according to FLT, दोस्तों याद है ना FLT क्या? जी हाँ, first law of thermodynamics. For a isobaric process, मैंने 4 प्रोसेस के लिए बात किया था. The mathematical expression को मैंने अप्लाई किया था. First one was adiabatic, then isothermal, then isochoric, and then isobaric. So if you can recollect, my dear friends, for an isobaric process, the expression that we got, and that was Qp is equal to delta U plus P delta V. हमें ये expression मिला था दोस्तों. Okay? अब दोस्तों ये दोनों expression को compare कीजिए. So what you get is that the right hand side of both the expressions are same. And therefore, it's a clear indication that the left hand side is also same. And therefore, what we say is that Qp is equal to delta H. तो ये हमें एक और expression मिला है. Okay, what is that? Qp is equal to what? Delta H. So delta is change, H मतलब enthalpy, Q is the heat, और क्योंकि यहाँ पे कोई sign नहीं है मतलब it is plus, so it is absorbed, और यहाँ पे जो P है that means what? It is constant pressure. Okay, so इस expression को अगर हमें statement के form में लिखना है, so my dear friends, how we are going to write down is, it is nothing but it's a change in enthalpy is equal to the amount of heat absorbed at constant pressure. Okay, this becomes the statement. Okay,
Once again I repeat, it is nothing but the change in enthalpy, okay, that is delta H, and that is equal to the amount of heat absorbed, okay, at constant pressure. Okay, so that is what the expression that we get. Okay, so समझ में आया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब यही FLT पढ़ा रहा था आइसोकोरिक में, तो वहां पर मैंने बताया था QV is equal to delta U. यानी वहां पर what we used to say is that is the change in internal energy is equal to the amount of heat absorbed at constant volume. यानी दोस्तों ये याद रखिएगा, जब इंटरनल एनर्जी की बात होती है तो वी टॉक अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब एंथैल्पी की बात होती है वी टॉक अबाउट कांस्टेंट प्रेशर. और इसीलिए दोस्तों यहां पर भी हम लोग ने प्रेशर कांस्टेंट रखा था. ओके, ये आइसोबैरिक में भी प्रेशर कांस्टेंट है, और जब कॉमन कंडीशंस है तो ये कंपैरिजन पॉसिबल है. ओके, इफ द कंडीशंस आर डिफरेंट यू कैन नॉट कंपेयर. But here the conditions were same. Okay, in both the cases the pressure was constant, and therefore we compared both these expressions, and therefore we came to this new expression. I hope you have understood this very well. Barabar hai? Oh yes. Next concept is we are going to find out a relationship between delta H and delta U. Okay, this is what we are going to find out. So the heading is relation between delta H and delta U. Now just now, my dear friends, I have derived an expression for change in enthalpy. What did it say? Delta H is equal to delta U plus P delta B. So what is exactly the relation between delta H and delta U? ये हमें पता करना है. Case number 1 दोस्तों याद रखिएगा. For solids and liquids. Okay, for solids as well as liquids, the change in volume is negligible. क्या बोलना है आपको? The change in volume is negligible. इतना ज्यादा वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आता है जब हम रिएक्शन की बात करेंगे involving solids as well as liquids. And negligible means we can ignore it. Okay, तो अगर इसमें हम लोग ने इग्नोर कर दिया तो पूरा का पूरा टर्म इग्नोर हो जाएगा. That means we are going to consider almost zero. Okay, so P into 0 is going to be 0. So this is going out, and therefore what we get is delta H is equal to delta U. ये expression हमें मिलेगा for which concept? For solids as well as liquids. लेकिन जब हम gases की बात करते हैं then there will be a change in volume. Okay, case number 2, for gases delta V has to be considered. Alright, तो उसका expression कैसे होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों, step by step I'll explain you. Alright, very slowly. So I'm very sure you will understand it very well. So step number 1, delta H is equal to delta U plus P delta V. This was already being derived before. ठीक है? Next thing is let us consider ideal gas equation. सभी को पता है क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं. देन व्हाट वी से इज अप्लाई इक्वेशन नंबर 2 टू इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. लेकिन कंडीशंस याद रखिएगा दोस्तों, एंड दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये हम लोग ने एज्यूम किया है. ओके, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको हम लोग ने किसको अप्लाई करना है? इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट. मतलब हमें दो एक्सप्रेशन मिलेगा, एक इनिशियल स्टेट के लिए और एक फाइनल स्टेट के लिए. लेकिन कंडीशन याद रखना दोस्तों कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यानी मुझे P1 P2 नहीं मिलेगा, मुझे T1 T2 नहीं मिलेगा. आई जस्ट कॉल इट एज P एंड आई कॉल इट एज T बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कांस्टेंट्स. राइट, सो वी गोइंग टू वी हैव PV1 is equal to N1 RT. This is expression number 3. PV2 is equal to N2 RT. This is expression number 4. अभी आप बोलोगे सर R1 R2 क्यों नहीं? कैसे होगा दोस्तों? How it is possible? R stands for a gas constant. So in the name itself, the last word is constant. So obviously it's not going to vary. Alright, so we cannot have R1 and R2. Alright, so it will remain as R and R. Next thing is, you know very well. Okay, now the changes, the formula is very clear. It's final minus initial. So यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 4 minus 3 करेंगे. Expression 4 minus expression 3. So we have PV2 minus a PV1
is equal to N2 RT minus of N1 RT. So therefore, P is common. So V2 minus of V1 is equal to, what we do is N2 minus of N1 and RT is common. So therefore, we have P delta V is equal to delta N RT, or I'll just write down over here G. Okay, delta N G, because this is very clear for gases. N stands for the number of moles, okay, of gas. इसलिए तो देखो दोस्तों यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है? It's a ideal gas equation. So हमें क्या मिला? P delta V is equal to delta N G RT. This is say expression number 5. अभी क्या करो? इस इक्वेशन 5 को इस 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो what we get is delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. Okay, where delta Ng is nothing but, we say it is the change in the number of moles of a gas. Okay, और ये हमारा expression है which shows a relationship between delta H as well as delta U when we consider what? Gases. When it is solid, they both are same, equal. Delta H is equal to delta U. Okay, but here, when it is gases, it is nothing but delta Ng RT. Alright, that is to be added in that. Okay, now delta Ng, I already told you, it is a change in the number of moles of the gas, and therefore, what we say is that delta Ng is equal to N2 minus of N1. What does N2 stands for? It is the number of gaseous moles of the products. Number 2 है ना, इसलिए products. तो N1 शायद समझ में आ ही गया होगा. Okay, you are so smart students, I know it very well. So सिर्फ क्या करना है इधर products की जगह पर क्या करना है? जी हाँ, सही बताया आपने. It will be what? Reactants. So it will be the number of gaseous moles of the reactants. Okay, that is what delta Ng. So please be very careful. We are only and only going to consider those species which are in the gaseous state. Okay, उसी को यहाँ पे consider किया जाता है. अगर वो solid or liquid है तो it has to be ignored. Am I very clear? Whatever that number of moles is. Okay, but it has to be considered as what? 0. Whenever that particular substance is either in a solid state or it is in the liquid state. सिर्फ अगर वो gaseous state में तो ही उसको consider करना है. Am I very clear with this part? समझ में आया दोस्तों ये आप लोग को? This is what is the relationship between delta H and delta U. One is this expression and the second one is this. ये वाला expression किसके लिए है? For solids and liquids. और ये वाला किसके लिए है? Yes, for gases. Okay, I am very sure you have understood this very well.